Look at the bar. Look at the TV cabinet. Look at the fall ceiling. Look at the मंदिर. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरी टीम के द्वारा डिजाइन एंड एग्जीक्यूट करा हुआ गुड़गांव का एक 3 BHK प्यारा और सुंदर घर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हैं मेरे साथ कपूर साहब, ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल हाउस। और कपूर साहब आपको ड्राइंग डाइनिंग का एक क्विक टूर कराएंगे और सारी चीजें समझाएंगे। ओवर टू यू कपूर सर। Thank you, Dheeraj. Welcome to this sweet home given by Dheeraj of Bright Interiors and his team. We are walking from the entrance lobby into the house, and as soon as we come into the living area and the dining room area, you can see that Dheeraj and his team have designed a beautiful TV panel with a showpiece rack on the one corner, and to all of this adds the false ceiling, a 3-tier lighting system designed by Bright Interiors. In the cove light, they have used white light. Then they have used in the second tier the cove light, and then the chandeliers are the warm lights. The design of the drawing room is to the taste of the entire family. Dheeraj and his team have designed this bar, though we are not very bar-centric people, but we just had our friends come in for a get-together, and everybody said, "Wow, that's a beautiful bar." Thanks, Dheeraj, for giving us this bar and the design. Jai Shifa, special thanks to you too. Living area has been designed in a manner that everybody feels the warmth and the comfort. The dining area, as you can see, is with the conventional dining table, which my parents gave it as a gift to us. And you can see this painting, which is my wife's selection and befits to this entire living and dining area. And now we will take you to the remaining areas visit. And this is the photo wall, the family reunion and the photo wall, and we will have Vandana to take you through. So I really wanted a photo wall here where we could display the photographs of our children and ourselves. I have a daughter and my son-in-law who are in US. So these are the memories when we last year visited our children, and I wanted them to be displayed here, for which Dheeraj Bhaiya really gave me all the ideas, and we came up with this wall very well. This is the most important part of the house, which I really wanted to be designed very well. क्योंकि जिनका दिया हुआ सब कुछ है उनके लिए तो सबसे सुंदर जगह होनी चाहिए घर में. So I had just put in my thoughts to Dheeraj Bhaiya कि हमें किस टाइप का मंदिर चाहिए, and he got it executed beautifully, exactly the way we wanted it. Now moving to our master bedroom, but before moving in, I would like to tell you something about these doors. These doors were panel doors earlier, which were not to my taste. In fact, we had a lot of discussion regarding that. So I requested Dheeraj Bhaiya to get these changed. So he beautifully got these flat paneling done and these mica sheets put on the doors. And now they are exactly according to my choice. So moving to the master bedroom. So this is our master bedroom.
and this is the beautiful TV panel which Dheeraj Bhaiya got designed, and with this fluting, and after that we got the bed which complemented the mica and the setting of the room. The cupboards also, they are beautifully designed according to the color combination scheme, that is light grey, which we wanted. This is my dressing area. I would like to add onto these beautiful lights and the false ceiling which they have got done. It's beautifully done. I wanted some different bed lights which we really hunted and got them, and they are looking very nice in the room, I believe. And now moving to the dressing area, we have a wardrobe here and the washroom this side. क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना घर के इंटीरियर को देखने में? कमेंट में हमें टाइप करके जरूर बताइए कि कौन सा एरिया आपको सबसे बढ़िया लगा। मुझे तो मंदिर एरिया बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं गेस्ट बेडरूम, और गेस्ट बेडरूम हमारी टीम से जाशिफा आपको दिखाएंगी। वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको गेस्ट रूम के बारे में बताऊंगी जो मैंने डिज़ाइन करा है इस क्लाइंट के लिए। ये है बेड के पीछे हमने मोल्डिंग दिखाई है। मोल्डिंग के सेंटर में हमने वॉलपेपर लगाया है, और ये ब्यूटीफुल बेड मैम की पसंद से आया है। हमने इधर स्टोरेज दी है, वार्डरोब स्टोरेज, और वार्डरोब के साथ हमने एक स्टडी टेबल दिया है मैम को डिज़ाइन करके। स्टडी टेबल में हमने स्टोरेज दी है। ये सर की प्रेफरेंस थी कि मुझे चाहिए स्टडी, वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ काम होता है तो हमने ये इसलिए छोटी सी एक स्टडी टेबल बनाई है सिंगल पर्सन के लिए। पीछे हम देखेंगे कि स्टोरेज है, और ये हमारी एक सीलिंग, चारों तरफ सीलिंग के साथ हमने COB लाइट दी है, कोव लाइट दी है, और ये ब्लाइंड्स हमारी सी थ्रू है। हम सी थ्रू ब्लाइंड्स कर सकते हैं। हमने कर्टन पैलमेट नहीं दिया है इसमें। सो थैंक यू जाशिफा गेस्ट बेडरूम एक्सप्लेन करने के लिए। और चलिए अब देखते हैं पेरेंट्स बेडरूम। दोस्तों थोड़ा सा चैलेंज है, पेरेंट्स रूम में पेरेंट्स आराम कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं किचन, और किचन दिखाएंगी वंदना मैम। So now moving to one of the most important part of the house, that is the kitchen. So I start with the door. I wanted a see-through door with a glass, which Dheeraj Bhaiya got it designed and got it done as per my requirement. So this is the kitchen and the worktop, which is as per my requirement, and it very well suffices to my needs. सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम विद माई क्लाइंट मिस्टर एंड मिसेज मनोज कपूर, और मैं चाहूंगा मैम और सर दोनों हमारी छोटी सी फीडबैक शेयर करें, कैसे मेरे से कांटेक्ट हुआ कपूर साहब का, और कैसे मेरी डिज़ाइन टीम ने इनका काम करके दिया, और किस तरीके से मेरी टीम ने इनको एग्जीक्यूशन करके दिया। ओवर टू यू कपूर सर। Thank you, Dheeraj. Thank you, sir. It's a pleasure to again be with you and talk about you. I came in touch with Dheeraj about 4.5 years back when I joined BNI Energizers. Yes. We had a wonderful journey during BNI, and looking into his zeal towards work and his passion towards execution, we tested him by giving him our office interiors in April this year, 23. In 45 days, Dheeraj completed the 2 floors of the office and made us feel the fastest journey to occupy this office. God gave us chance, and Dheeraj came up again when we bought this flat in July, and he started the interior work in September to complete it in the last week of November. Entire team of Dheeraj is very passionate about their work and know their job very well. He does his interior works absolutely as per the design and as per the timelines. Dheeraj, there'll be many more referrals coming for you, and obviously if we have to do any other project for ourselves,
you would be the only choice for us. Thank you, sir. Thank you. Vandana, would you want to say something about Dheeraj? Sure. Dheeraj ji has really been a giver of this house to us. In fact, I would say these were walls which he converted into a house, and I owe that to you, Dheeraj bhaiya. Thank you, ma'am. And his entire team is very, very efficient. Jeshifa, she worked really very hard. I kept on changing the designs. Nahi, Jeshifa, I don't want this. Now I want this. And she never said a no. Every time, whatever we wanted, they worked on that and they gave us everything as per our want. सो थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू कि आपने इतने बढ़िया प्रोजेक्ट में मुझे अपॉर्चुनिटी दी। एक ही साल में कपूर साहब ने हमें दो काम दिए, ऑफिस का, घर का। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी डिज़ाइन टीम से जाशिफा, प्रिया, दोनों का शुक्रिया। दोनों ने मिलके बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया। और एग्जीक्यूशन टीम से वर्मा जी का, राम भाई का, दोनों का शुक्रिया। और आप सब का भी शुक्रिया। आप सब हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें प्यार करते हैं, तभी हम पॉपुलर होते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर जरूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।